Good morning, student. In this chapter polynomial, chapter 2, we will discuss about the zeros and we will verify the relationship between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial. If we have a quadratic polynomial, we can find out the zeros of that quadratic polynomial, and we can also verify the relationship between the zeros and the coefficient. So here we have a quadratic. For example, we have a quadratic polynomial x square minus 2x minus 8. Student, this is a quadratic polynomial and we have to find the zeros. If we compare it with ax square bx plus c. Ax square bx plus c is also a quadratic polynomial, and we compare this quadratic polynomial with ax square plus bx plus c. Then we have a equal to 1, b equal to minus 2 and c equal to minus 8. Now we have to find the zeros. अब हमें zeros find करना है x square minus 2x minus 8 का. So x square minus 2x minus 8. Then we have to split the middle term 8. 8 के ऐसे factor, such factors of 8 whose subtraction should be 2. So 4 to the 8, यानी 8 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 2 आए, तो 4 and 2, 4 to the 8, 4 minus 2 equal to 2. So here we have x square minus 4 minus 2 into x minus 8. So we have x square minus 4x plus 2x minus 8, and x is common, x minus 4. From here we take 2 is common, and in the bracket we have x minus 4. Now x minus 4 is common and we have x plus 2 in another bracket. Now we have to find the zeros. For zeros find करने के लिए हम क्या करेंगे? x minus 4 should be equal to 0, then x equal to 4, and x plus 2 equal to 0, then x equal to minus 2. अब जो ये zeros हैं, we can take these zeros as alpha and beta. X equal to 4, let alpha equal to 4 and beta equal to minus 2. तो इन zeros को हम x को मैं alpha ले लेता हूँ, x equal to 4 को, और x equal to minus 2 को मैं beta ले लेता हूँ. Now sum of zeros यानी alpha plus beta equal to 4 plus minus 2, that is 4 minus 2, that is 4 minus 2 is 2. Alpha plus beta equal to 2. Now I have b equal to minus 2. So what I have to do, I put minus sign before this 2, and the a equal to 1 here, so this will become minus b upon a. Alpha plus beta equal to minus b upon a. You can see from here that b equal to minus 2. यहाँ पे b क्या है? माइनस का 2 है, और a क्या है? 1. तो मैंने एक माइनस 2 यहाँ पे लिया और एक माइनस मैंने बाहर लगाया, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिया? 1, that is 1. So it becomes alpha plus beta equal to minus b upon a. b is minus 2 and a is 1. So this is the first relationship between the zeros and coefficient. It means sum of zeros equal to minus b. इसका मतलब ये है कि sum of zeros क्या है? minus b upon a. अब हमें क्या करना है? product of zeros find करना है. Now alpha beta यानी product of zeros. अल्फा हमारे पास क्या है? अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस 2. 4 to the 8. अल्फा बीटा आई कैन राइट इट इज माइनस 8 अपॉन 1. मैं इसको माइनस 8 अपॉन 1 रख सकता हूँ. c अपॉन ए, माइनस 8 इज c और a इज 1. तो अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a. So student, in this manner we can find the zeros, and we can also find the relationship between the zeros and the coefficient.
Relationship between zeros and the coefficient means sum of zeros, that is alpha plus beta, and product of zeros, that is alpha beta. So here we have sum of zeros, alpha plus beta should be minus b upon a, and alpha beta should be c upon a. यानी alpha plus beta minus b upon a होना चाहिए, और alpha beta क्या होना चाहिए, that should be c upon a. तो इस तरीके से हम जीरोस फाइंड करेंगे, और जीरोस फाइंड करने के बाद उनमें से एक जीरो को हम अल्फा लेंगे, दूसरे जीरो को हम बीटा लेंगे, फिर उसका हम सम निकालेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ polynomial to find the zeros and to verify the zeros and the relationship between the zeros and the coefficient. Now we will start next question. And this question is also a very important question. 6x square minus 3 minus 7x. 6x square minus 3 minus 7x. तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करूंगा पहले. तो 6x स्क्वायर इसको फॉरवर्ड रखूंगा आगे, एंड माइनस 3 विल गो बियॉन्ड 7x. Now this is a quadratic polynomial in the form of ax square plus bx plus c. अब ये इस फॉर्म में है, ax square plus bx plus c की फॉर्म में है ये. Now on comparing a equal to 6, जब हम कंपेयर करेंगे b minus 7 and c equal to minus 3. Now because this is a quadratic polynomial, अब हमें क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, इसको फैक्टराइज करना है हमें. इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें फैक्टराइज, 6 3 जा 18. 18 के ऐसे फैक्टर हमें फाइंड करने हैं जिनको माइनस करके 7 आए. तो 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 7, 18 होगा 9 2 जा 18, और 9 minus 2 7 होता है. 9 minus 2 is 7. So this is 6x square minus 9 minus 2 into x minus 3. So here we have 6x square minus 9x plus 2x minus 3. Now I have to take common. I take 3x common from here. This is 3x is common. 3 2 ja 6 minus 3 plus I am taking 1 common. So it is 2x minus 3. Now it is 2x minus 3 and 3x plus 1. ये क्या है, 2x minus 3 है और 3x plus 1 है. यानी कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, 4 जीरोस, और जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार 2x minus 3 को जीरो रखेंगे, तो 2x कितना आएगा, दैट विल बी 3, और एक बार हम 3x plus 1 को जीरो रखेंगे, तो 3 कितना आएगा, minus 1. So here we have 2x equal to 3 and 3x equal to minus 1. So from here we have x equal to, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x equal to 3 upon 2, and from here x equal to minus 1 upon 3. यहाँ से हमारे पास आता है x equal to 1 upon 3, और यहाँ से आता है हमारे पास x equal to 3 upon 2. अब इसको मैं अल्फा लेता हूँ और इसको क्या लेता हूँ, बीटा. लेट अल्फा इक्वल टू 3 upon 2 and beta equal to minus 1 upon 3. Up now what we have to do, we have to find the sum of the zeros and product of the zeros. Sum of zeros yani alpha plus beta. Alpha plus beta. Alpha is 3 upon 2 and beta is minus 1 upon 3. So here we have 3 upon 2 minus 1 upon 3. I take 2 3 just 6. 6 is LCM. And 2 3 ja 6, 3 3 ja 9, 3 2 ja 6, 2 1 ja 2. This is 9 minus 2, 7 upon 6. Alpha plus beta. Alpha plus beta. But yeah, b is minus 7 here. Here b is minus 7. Alpha plus beta equal to
-7/6। तो अगर मैं यहाँ पे -7 लेता हूं, आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट, देन 6। Here b is -7 and a is 6, so it becomes -b/a. Alpha plus beta equal to -b/a. Alpha plus beta should be equal to -b/a. Now product of zeros, alpha beta. Alpha beta, here we have 3/2 into -1/3. So when we multiply, it is 3 1 ja 3 and 3 2 ja 6. Alpha beta equal to, so here we have c, -3 is c and 6 is a, so here we have c/a. It means alpha plus beta equal to -b/a and alpha beta equal to c/a. Again we have verified the relationship between the zeros and the coefficient. So the relationship between the zeros and the coefficient is alpha plus beta equal to -b/a and alpha beta equal to c/a. तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ax² plus bx plus c से कंपैरिजन किया, देन हम फाइंड कर सकते हैं a, b और c की वैल्यू कोएफिशिएंट्स की। उसके बाद हम फैक्टराइज करते हैं, उसको फैक्टराइज करने के बाद जीरोस फाइंड करते हैं, और फर्स्ट जीरोस को हम अल्फा लेते हैं, सेकंड जीरो को हम बीटा लेते हैं। देन वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा एंड देन वी वेरीफाई द रिलेशनशिप। नाउ one more question we will discuss here. यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हमें इफ वी आर गिवन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अगर हमें जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया हो तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें गिवन है, वी आर गिवन दैट 1/4 एंड -1। 1/4 यानी सम ऑफ जीरोस, हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1/4 and product of zeros is also given। product of zeros क्या है, -1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है 1/4 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना -1। सो x 4 is LCM, 4 is LCM। Now we have 4x² minus x minus 4. This is 4x² minus x minus 4. Let here in the denominator we have x 4, so we take let k equal to 4. So 4x² minus x minus 4 upon 4. It will be cancelled out, so we have, this is the quadratic polynomial. This is the quadratic polynomial. In this manner we can find the quadratic polynomial if we are given the sum of the zeros and product of the zeros. So sum of the zeros we have alpha plus beta 1/4 and alpha beta equal to -1. We have the formula for the quadratic polynomial equal to k into x² minus sum of zeros into x plus product of zeros equal to k into x² minus sum of zeros is 1/4 and product of zeros is -1. Now we take 4, 4 is the LCM, and then this will be 4x² minus x minus 4,
and let k equal to 4, because in the denominator we have 4, so k, we should take k equal to 4. Then 4 and 4 is cancelled out, and the quadratic polynomial is 4x square minus x minus 4. This is the quadratic polynomial, and this is the method to find the quadratic polynomial. Now we move to next question. You can take this screenshot. One more question, student. In this question we are also given the sum of the zeros. Alpha plus beta is given to us, that is minus 1 upon 4, and alpha beta is 1 upon 4. So here we have alpha plus beta, yani sum of zeros, equal to minus 1 upon 4, and alpha beta is 1 upon 4. So quadratic polynomial, we have the formula quadratic polynomial equal to k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. K into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros equal to k into x square minus sum of zeros, that is sum of zeros, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया, माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा कितना दिया हमें 1 अपॉन 4. So here we have k into x square plus 1 upon 4 into x plus 1 upon 4 equal to k into, we take 4 is the LCM, so here it is 4x square plus x plus 1. 4 is the LCM, so it will be 4x square plus x plus 1. Now in the here we have denominator, in the denominator we have 4, so we should take k equal to 4. So here we have 4x square plus x plus 1 upon 4. 4 and 4 is cancelled out, so 4x square plus x plus 1. This is the method to finding out the quadratic polynomial if we are giving the sum of the zeros and product of the zeros. So we have discussed two type of questions here, two type of problems here. In the first problem we had discussed that we have to find the quadratic polynomials zeros, and then we have to verify the relationship between the zeros and the coefficient. और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जबकि पहले वाले में हमें क्या करना था, पहले वाले में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, उसका जीरोस फाइंड करना था, उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड करनी थी. लेकिन इसमें हमें क्या है, हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है इसमें, एंड वी हैव टू फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फिर हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तो thank you for today, and you could ask me the comment section, in the comment section if you had any query, then we will discuss it later on. Thank you.